This conference will now be recorded. Okay then. So, firstly, please share your assignment status. Hanji, assignment status. Done or not done? Please share in the group. Please share in the WhatsApp group. Who has in the WhatsApp group? You can share. Good morning, Deepak sir. Good morning, Bhatia ji. Good morning. Everyone, please share your assignment status. Right? Everyone, please share your assignment status. Yes, Divya, that's fine. Completely fine. Rest, please share your assignment status in the group. Good morning, Deepak. Mira, that's only a single class assignment, nothing else. Oh, okay. I know I was Yeah. asking what assignment because this is first class to mobile, right? Yes. Yeah. It's not a problem for you people. Okay. Okay then. So today, firstly, म्यूट कर लो क्लास guys. पहले हो चुका है क्या? नहीं कैलाश नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ म्यूट कर लो. मैं सोच रहा हूँ कौन सा असाइनमेंट आप बोल रहे हो. नहीं. ओके देन म्यूट कर लो एक बार प्लीज. फर्स्टली पारस दुआ, what are the 4 pillars of a Java code? Paras. Methods, class, and First one, class creation. class Okay, creation. let me Then just 1 minute. Sandeep Tyagi, what do you mean by class? Meera, what do you mean by class? It is a collection of methods and objects. Which represent variable and method. Class. Right? Yes. Uh, Nikhil Rathi, what do you mean by variable? So a variable contains some values and that can be changed. Yes. Which stores some value and value can be changed. Okay. Let me ask Divya Koshik, what do you mean by method? Yes, please. Divya. I don't know because didn't That's see the fine. That's fine. complete. I'll Mhm. 5 to कोई 10 problem. minutes. कोई problem. Dipshika, what I'll do you mean be by method? Method is Mhm. when we want to perform an action or an operation. Which perform any action or operation. Right? When we want to perform any operation or action, we will create method for it. Second point, Amit Khanna, what was the second pillar? Kunal, what is the second pillar? Main method inside the Main method. class. Yes, main method creation. Achal, what do you mean by main method?
What is main method? Main method is the entry point of execution. Main method is given by Java from where execution will start. Bhavna Sharma, what is the third pillar? Sir, object creation inside a main method. Good one. Object creation inside Inside main method. main method. Bharti, what is the syntax of Ritik mute कर लेना please. What is the syntax of object creation? Ritik mute कर लेना please. ये बटन होगा mute unmute का. Yes, Ritik, what is Bharti, what is the syntax of object creation? Farah, what is the syntax of object creation? Kailash, Yes. what is the syntax of object creation? Class name space reference variable equal to new space Hmm. class name. Good one. New class name. Yes. Let me ask Minakshi. Can you explain this statement? Yes, sir. What's the question? Can you please explain this statement? Yeah, This so new is the keyword to create Hmm. the object, Hmm. and that object's memory reference variable is pointing to that. Yes. New keyword will create the object. After that, memory will be allocated. There will be some address of that memory. Reference variable will point to that memory address. Meera, what is the fourth pillar? I don't remember, Deepak. Okay, no worries. Nikhil, In the main method using calling variable in main method using reference variable. calling variable and method, not main method. User defined method. Calling method and variable using reference variable. Let me draw something. This is a class. Inside class we have variable, we have method, and this is the main method. Here we are creating the object, and by this reference variable we are calling this variable and method. That's it. This is variable, this is method, this is main method, and this is reference variable. That's it. Clear to everyone? Guys, please give confirmation in the chat box. Right? Clear to everyone? Right. Now, Darpan, what do you mean by method? Sir, in method
we want method is for construction and is to construct the variable. No, method is used for performing any action Any or action, sorry, operation, operation. right? If we want to perform any action or method, action or operation, what we will do? We will create Method. method for it, right? Now, हाँ जी, क्लियर है सबको ना? किसी का कोई डाउट? हिमांशु म्यूट कर लो प्लीज, प्लीज म्यूट रखो यार, प्लीज म्यूट रखो यार, अनम्यूट ऐसे ना करो प्लीज। श्रीकांत क्लियर है? श्रीकांत Yes, Deepak. Yes, Deepak. Little bit. चलो Now, ठीक है। grabbing it. हाँ, मेथड फॉर परफॉर्मिंग any action or operation, right? We have discussed about method something like that: public void abc parenthesis, and this is the boundary of the method. Now here, what is abc? Abc is the Method name. Method name. abc is the method name. And from here a method will take the inputs. From here a method will take the Input. inputs, and this is the method output. This is the method output, and this is the boundary of the method or body of the method. This is the body of the method. Just a moment. Can anyone please put this screenshot in the group? Can anyone please put this screenshot in the group? Right. Now, there are two type of the methods. There are two type of the methods. First one is the default method, and second one is the parameterized method. There are two type of the method: default method, and second one is the parameterized method. When a method is not taking any input, blank. Here it is blank. Default. Which type of method is this? Default. Default. When a method is not taking any inputs, that is default method, right? Public void. This is which type of method? Parameterize. This method is parameterized method because it is expecting to integer value as a Argument. Parameters. input as a input. तो कितने तरह के मेथड है? How many type of methods we have? We have two type of the methods. Two type of methods. First one is the which one? Shrikant? Default method. And second one Yes. is the Parametric method. parameterized method.
What do you mean by default method, Shiv? Sir, it will take no input, sir. When a method will not Take any when a input. method will not take any input. It's default. Default. What do you mean by default method? Which does not take any input. Yeah, which will not take any input, which will not take any input. That will be default method, right? Which will take input, that will be parameterized method, right? Let me ask Paras, how many type of methods we have? Default method and parameterized. Two types of method are there. Right? Default method and parameterized And method. parameterized method. Just a Yes. moment. Dushyant, what do you mean by default method? Sir, in default method, we don't take any input. Yes, when a method will not take an input. जब एक method कोई input नहीं लेगा, वो कैसा method होगा? When a method will not take an input, which type of method it will be? Deepak Sharma? It will be Dipshika, which type of method? Default method. Joy, what do you mean by parameterized method? Bharti, what do you mean by parameterized method? When a method is taking any input, that will be called Yes. parameterized method. Yes, that will be parameterized method. Now, void and non-void. There is another concept. When we are when we are when we are writing void, that means that method will not return any result. What do you mean by void? Return type. Return type. When we are writing void, what is the meaning of void? No return type. Method will not return anything. Yes. Non-void. Which has When we will make a method as a void method, when we will make a method, when we need the output of that method into some other method. when we will make a method as a void, when we don't need the result Return value of that method for further use. In that case, we will make it as a void method. void एक method को void method कब बनाओगे? When we will make a method as a void method, Anirudh? Yeah, so we would be making a method as so void or non-default void. Void. When we do not want any result from it, मतलब उसका Yes. कोई हमें रिटर्न नहीं चाहिए, बस वो जस्ट एक एक्शन फॉलो करेगा और कुछ रिटर्न नहीं करेगा. Yes. Divya Kaushik, when you will make a method as a void method? So when we don't want any output, or when we don't want any further output, so that When we don't need we the don't result of want that. a result, when we don't need the result for further any Yes. actions, then Yes. When we will make a method as a non-void? when we want output. Yes, when we need the result of that method for further use. In that case, we will make it as a non-void. non-void method. हाँ जी, एक मिनट रुकना, just a moment. Let me ask Arvinder भाई.
When you will make a method as a void method? Sir, when we don't want any type of result, like any return type. So when we don't want any result from the method, we will make it void. Yes. When you will make a method as a void method? कब बनाओगे एक method को void method? When we need a return value from that method, then When the result of that void, method void, is void. Void. When we don't need the result of that method for further use, in that case we will make it as a method as a void method. Right? Let me ask Shrikant. When you will make a method as a non-void method? Deepak, when we want to get a result of that, so we can make that non-void method. We can Yes, go good with the one. non-void Good method. one. Good one. Good one. Good one. सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, जब एक मेथड के रिजल्ट की आगे जरूरत है, जब एक मेथड के रिजल्ट की आगे जरूरत है, तब आप उसको नॉन वॉइड बनाओगे. जब एक मेथड के रिजल्ट की आगे जरूरत नहीं है, आप उसको वॉइड बनाओगे. Right? When we need the result of a that method for further use, in that case you will make it as a non-void. When we don't need the result of that method for further use, we will make it as a void method. Let me discuss some examples. Public void ABC. Dipshika, can you please explain this method? What is the name of the method? What is the Name name of of the the method method? is ABC. Default method, sir. Sir, are you Yes. Method asking name me? ABC. Yes, Dipshika. ABC. Method name ABC. ABC. Method type default or Default. parameterize? Default. 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 And method output, yes or no? No. It will give no. No. Because it's void. Void method. Will not return. Right? Now method name ABC. ABC. Method type Default. default. Integer Good or one. No यार integer क्यों बोल रहे हो? Type पूछा मैंने, type default. default. Here Default. method output, yes or no? Yes. Parameter. Non-void. भाग्य जी parameterize क्यों बोल रहे हो? Sorry. Non-void. No, void. Sir. Parameter is Non-void. something input. My mistake, sir. Sorry. Non-void. It will return which type of value? Integer. Int value. Right? It will return int value. Any doubt, anyone? Please feel free to ask. Next, let me take some more example. Mute कर लो, please. Let me take some more examples. Sir, एक question more. Sir, एक I have मिनट एक मिनट रुकना प्लीज, एक मिनट रुकना. What is the method name? ABC. Method type Parameterize. parameterize. To parameterize method make sense. To parameterize, it is expecting what it is expecting as a input. क्या expect कर रहा है ये? To integer value. Float value. Yes. फ्लोट वैल्यू क्यों बोला यार? किसने बोला फ्लोट वैल्यू? हवा में आंसर नहीं करना यार, हवा में आंसर नहीं करना. Why we are saying float value? इनपुट कहां से लेता है मेथड? Method output Parameters. Non-void. non-void. It will return which type of value? Float. Float value. What is float value? Decimal value. Decimal value. Point value, right? Now
Can anyone explain about this method? Can anyone explain about this method? Method name? Method name Sir, here method name Default. ABC. Method Type? type two parameterized method. Two Two parameterized type. parameterized method. Method output Output void. is void. 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 It will not return any Value. Output. Value. It will not return any result. any value or result. Any doubt anyone? There is no relationship between sir. mute कर लो please सब लोग. There is no relationship between inputs and output. Means a method can take the inputs and it can't return the result. हो सकता है. A method can take the inputs and it can return the result. A method can't take the inputs and it can't return the result. A method can't take the inputs and it can return the result. Right? एक मेथड इनपुट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता. एक मेथड आउटपुट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. Any doubt anyone? Please feel free to ask. Yes, please. हाँ जी, doubt. Guys, please give confirmation in the chat box. सर एक बार void और non void मेथड बता देंगे क्या दोबारा से? हाँ जी मैं दोबारा से बता देता हूँ. म्यूट कर लो एक बार. Void. When we are writing void, that means that method will not return any result. Means output. This is output. Non-void. When we are not writing void, that is non-void method. Means that method will return any result. Means output. When we will make a method as a void method, कब बनाएंगे? As a void. When we don't need the result of that method for further use. In that case, we will make it as a void method. When we will make a method as a non-void, when we need the result of that method for further use, in that case, we will make it as a non-void method. किसी का कोई डाउट? हाँ जी, अब बताओ. Guys, please give confirmation in the chat box if things are clear. सर भी करेंगे. हाँ जी. conceptual thought मेरे माइंड में आ रहा है. जब हाँ हम जी. लोग कोई डेटा टाइप रिटर्न करते हैं किसी भी टाइप का तो हम उसके आगे उस डेटा टाइप का मेंशन कर देते हैं लाइक इंटीजर फ्लोट और समथिंग लाइक दैट. बिल्कुल यहाँ पे आप सही कह रहे हो. जब यहाँ हम पे वॉइड लिख रहे हैं तब आई मीन क्या हम इस चीज को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि वॉइड इज आल्सो अ डेटा टाइप? नो void data type नहीं होता. Void is a keyword. Void is a keyword only. Void is a keyword when you want to make, when you don't need the result of that method, just write void. Make that method as a void. That's it. Void has no return type. हाँ, एक बार ना अभी प्रैक्टिकल करते हैं. रुको, प्रैक्टिकल करते हैं. चलो. और सर एक चीज और इसमें देख लेते हैं कि क्या ये मतलब ये इन एक्चुअल क्या रिटर्न करता है? नल रिटर्न करता है कि जीरो रिटर्न करता है? मैं भी लूंगा. हाँ, एक बार अभी देखते रखो. How many methods required to solve this expression? 2.
3. Sum, 3. subtract, 3. and third one, Multiply. multiply. Your first method will be which one? Your first method? Sum. Sum. That will be default or parameterize? Parameterize. 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 How many parameterize? 2. That will be void or non-void? Non-void. 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 That will be void or non-void? Non-void. 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 Why it will be non-void? Because Because we want method. Because we need some results for further use. Yes, because we need the result of some method in the multiply method. Multiplication. Right? So that will be which type of method? Non-void. 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 Our second method will be Subtraction. 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 That will be Two parameterized. And again non-void. Two parameterized. subtraction will be Non-void. also to parameterize Non-void. Non-void. non-void method. Right? It will take two inputs and it will be void or non-void? Divya? Non-void. 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 Third method will be Multiply. 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 Multiplication. Multiplication. That will be Paras. Two That will be Two Two parameters. parameterize. Parameterized. Two parameterized. Two parameterized and void. Non-void method. Non-void. And void method. It will be void. Just a moment. एक Void. म्यूट कर लो यार. Void. सब लोग म्यूट करो प्लीज. सब लोग म्यूट करो. नॉन void क्यों बोला है? किसने बोला नॉन void? Why we are saying non void? Do we need the result of this method? क्या इसके इस मेथड के रिजल्ट की जरूरत है आगे? नहीं है ना? तो कैसा होगा? No. Void method होगा. void method होगा. Right? Remember याद करो void method क्या होता था? What is void method? void क्यों बनाते थे? When we don't need the result of that method for further use, in that case we will make it as a Void. Void method. void method. एक बार चैट में अपडेट करो. सर लेकिन उसका आउटपुट तो आएगा ना सर, तो वो आउटपुट हम देखो CISO म्यूट कर लो एक बार. CISO is used for printing on the console. CISO क्या है? प्रिंट करने के लिए. CISO is not related to void or non-void. You can print a message in both the cases. प्रिंट करना रिटर्न करना नहीं होता, राइट? इन void, इन नॉन void. CISO आप कब कर सकते हो? दोनों केस में कर सकते हो, राइट? In case of non-void method, return is the compulsory statement. In case of void method, you can't write return keyword. अभी देखते हैं प्रैक्टिकली. चलो पहला पिलर क्या था? What is the first pillar? What is the first pillar of a Java code? class creation. Class creation. Okay, let me create a class for you. मेन मेथड भी पैरामीटराइज्ड मेथड होगा ना? हाँ अभी आगे डिस्कस करेंगे भाई हिमांशु, आगे का कंसेप्ट है वो. एक बार म्यूट रखो प्लीज सब लोग. गाइस प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. ऋतिक,
What do you mean by void? Ritik, what do you mean by void? Paras? void is a method जिसमें हम कोई भी आउटपुट हमें नहीं चाहिए होती है आगे फर्दर यूज के लिए. Void is a keyword when we are making, void is the return type, we can say. When we don't need the result of a method for further use, we will make that method as a void method. Void method. Right? Let me create. What is the first point? What we will create? Class. Class. What is the name of? Let me create a class for you. New. Mute कर लो please. Class 2. Mute कर लो please. Mute रखो. सर रविंदर म्यूट कर लेना भाई. What do you mean by class? Paras? Class is a set of methods. Methods and variables. So mute कर लो please. Please mute रखो. What will be our first method, Kunal? पहला मेथड कौन सा होगा हमारा? Divya, what will be our first method? Sum. That will be default or parameterize? Parameterize. It will be void or non-void? Non-void. Non-void. Good one. Right? How many input this method is expecting? कितनी input चाहिए इस method को? 2 2. A और B कोई नहीं बोलेगा. हाँ ये अच्छा था निखिल, बहुत अच्छे. किसी ने A और B नहीं बोलना. A और B तो वेरिएबल का नाम है. आपको क्या बोलना है कि इस मेथड को 2 इंटीजर वैल्यू चाहिए. दिस मेथड रिक्वायर 2 इंटीजर वैल्यू. Don't say A and B. Don't say A and B. Right? We will say it require 2 integer value. See so? If you are printing something in the double quotes में अगर कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है? As it is print होता है. Right? Remember? Yes. Yes, sir. Yes, sir. And we want to print the value of C. Result. Plus C. Plus C. Plus is used for concatenation. दो चीजों को, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए. If we want to concat two statement, here we want to print a message. Also we want to print the value of C. So which keyword will be used for concatenation? Plus. Return C. What this method is returning? This method is returning a Value of some result. integer Value of C, which is a value. Second method. What will be our second method? Subtract. It will be default or parameterize? Parameterize. Right? Good one. A3 is equal to A1 minus A2. Sub result is plus A3. Right? And what we will write here? क्या लिखेंगे यहाँ पे? संजय? Return A3. Return A3. What will be our third method? Multiply. That will be void or non-void? Void. That will be void. Multi. That will be default or parameterize? Two parameterized. Parameterized.
Two parameters. Rent it. Can we write? No. No. We can't write return keyword. We can't We write. cannot do it. Because it is a Yes. void method. Yes. We can't write return statement in case of void method. Void. Right? For second pillar. What is the second pillar? Main method creation. Class creation. Main method Main creation. method. Main method creation. Just come outside this method. Type main and which keyword we will use? Which key we will use? Control plus space. Control Control plus plus space. 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 This is the main method. Third pillar. Object creation. Here. Object creation. And main class. Main method. Method. Add the main method. What is the name of the class here? Class 2. Class 2. Class 2. Class 2. So just type class 2. Reference variable you can give any name. For example, DC is equal to new class 2. What is the fourth pillar? Calling. Variable methods. Calling variable and method. Help Of the reference class variable. using Reference variable. Reference variable. DC dot. Which method we will call first? Sum. Sum. From How many inputs we have to pass? Two integer inputs. Good one. 2 integer values. This method is returning something. Sum. Some result sum. yes, sir. Which type of value it is returning? Integer value. Integer. So Integer value. store the result of this method where in a int variable. After that we will call which method? Subtract. Subtraction. Is this method returning something? Yeah. Yes. Which type of value? Yes, sir. Integer. Integers. Int. After that we will call which method? Multiply. Multiplication. Multiply. But we will pass. Two integer values. Integer What value. we will pass? No result. And this will not be returning. Some Yes, result good and one. subtraction result. Some result and sub result. Mute kar please. Now see the output. Some result is 14, 10, 140. Any doubt? Any doubt? Please feel free to ask. Guys, please give confirmation in the chat box. Right now. मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी प्लीज कुणाल. अभी हमने मतलब थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, ठीक है, क्लास होनी चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए, बट अगर मैं क्लास नहीं यूज करता हूँ, सिर्फ मेथड्स यूज करता हूँ और उसी पे ही मतलब कॉल करता हूँ, तब भी चल जाएगा ना वैसे तो? नहीं. In Java we have to create class. मैंडेटरी होता है? मैंडेटरी होता है. Okay. Right. I have a doubt. See, in those methods, yeah, can you go back to those screen? Yes. Even if I didn't return, if I give a print statement for A3, it will work, right? Like for the not multi, the other one also. Yes. Oh, Right. okay. Okay. Yeah. Now we have to do this assignment. 10 plus 2 plus 2 minus 2 into 2 divided by 2. How many methods we will create?
4. Yes. Four methods, sir. Five method. Four methods. We will create some method only once. We will create some method only once. We will call this method twice. How? Go to the main method. From where we will call this method? Main method. Reference variable dot sum. How many values we need to pass? First time 10, 2. Second time this method is returning something. Yes. Again we will call which method? Again we will call which method after this? Some. Again. Again Some. some method. This time what we will pass? Results. Some result and two. Some result, 2. This method is returning something. Yes. Some two. After that we will call which method? Minus. Subtraction. Subtraction. Reference variable dot subtraction. What we will pass? Some results. Some result two and two. Some result 2. 2, 2. This method is returning something. Yes. In subtraction result. Yes, sir. In store where? In subtraction result. After that we will call which? अप्लाई करेंगे. हेलो. Sorry. माइनस अप्लाई करेंगे इधर. Sorry क्या कह रहे हो? माइनस का 2 नहीं अप्लाई करेंगे जैसे -2 ऊपर दिया हुआ है. नहीं भाई, वो तो मेथड के अंदर करोगे ना. -2 जो भी करना है यू विल डू इनसाइड मेथड के अंदर कर रहे हैं. यहाँ पे देखो 12, 2 दिया था तो ऑपरेशन कहाँ पे करा? ओके. मेथड्स में वैल्यू पास कर. After that we will call which method? Multiply. What we will pass? Multiply. Sub result. Subtraction result. Sub result. And 2. 2. This method is returning something. Multiply. Yes, After sir. that we will call which method? Division. Division. This method will return something. Yes or no? No. Yes. No. Why it will return? Why it will No. return? No. It will be of void type. It will be void method, right? Because we don't need the result of this method, division method, for further use. Mute कर लो एक बार please. Mute रखो. Mute कर लो. Assignment number 2. (10 divided by 2 minus 2 plus 2 minus 2 into 2. ये आपने अब ट्राई करना है. How many methods you will create for this? Four. methods. 4. Right. We have to close these 2 assignments and everyone has the access of the drive. ड्राइव का एक्सेस है ना सबके पास. मैं रिक्वेस्ट आप लोगों को दे दूंगा मीरा. राइट, दिस इज द ड्राइव. Okay. Right, we have created the drive. Right, any question anyone, please feel free to ask. Let me recall something. Yes please. Sir, I have one query. Yes please, Ravinder. Sir, what is the use of void methods? Void method. Void method basically, here we are performing any operation or action, right, and we don't need the result of the method, then we will make it as a Void method, right? as a void method. जब आपको मेथड के रिजल्ट की आगे जरूरत नहीं है तब आप क्या करोगे? void बना दोगे. Right, it's up to you. It's up to your requirement.
जब आपको उसके रिजल्ट की जरूरत नहीं है तो आप वॉइड बना दो, जब उसके रिजल्ट की जरूरत है तो कैसा बनाओगे? नॉन वाइड। नॉन वॉइड बनाओगे। किसी का और कोई सर और ये डाउट? हाँ जी और सर सर प्लीज। ऐसे आपने मेथड सर प्रैक्टिकली कहाँ यूज होंगे? प्रैक्टिकल कहाँ यूज होंगे ये मैं आगे लूंगा अरविंदर भाई, आगे डिस्कस करूंगा। सर आपने जो सॉरी सॉरी एक मिनट रुकना रविंदर भाई, आगे लूंगा ना ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स लूंगा, जब हम करेंगे तब मैं ओके ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। हाँ जी प्लीज। ओके सर आपने जो असाइनमेंट दिया है सर, पहले एक बार स्क्रीन सर बैक करेंगे क्या ये वाला? हाँ हाँ ये वाला यस सर, ये सब रिजल्ट लिखा है सर, जो अपने थर्ड रो है सर, ये हाँ जी सर, ये सब रिजल्ट टू, ये सर मल्टीपल आप वाला सर जो है ना, मल्टीपल यार वाला सब रिजल्ट। आपने कुछ ऐसा करना है आपको। सब मेथड आपका रिटर्न करेगा, सब मेथड विल रिटर्न, सब्ट्रैक्शन मेथड विल रिटर्न, मल्टीप्लिकेशन मेथड विल रिटर्न, डिवीजन विल नॉट रिटर्न। देखो रिटर्न ये आपका रिटर्न करवा रहा है, देखो ऐसा ये रिटर्न करवाया यहाँ पे, क्योंकि कैसा मेथड है, ये कैसा मेथड है, विच टाइप ऑफ मेथड इज दिस? नॉन वर्ड्स। इंट टाइप। नॉन वर्ड। नहीं सर, वो मेरा क्वेश्चन था मल्टीपल में सर, आपने सब रिजल्ट लिखा हुआ है उधर वो ब्रैकेट में आप रिजल्ट के लिए। एक बात बताओ अच्छा ये यहाँ सर कहाँ पे? यार एक सब बात रिजल्ट बताओ, सब रिजल्ट जो है इसको आपको कहाँ पास करना है? देखना जरा एक्सप्रेशन को देखना, जो इतना रिजल्ट है वो किसको देना है आपको? इतना रिजल्ट मल्टीपल। सब्ट्रैक्शन तक का रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन को देना है ना। जी जी। तो इसलिए हमने क्या करा, सब रिजल्ट जो है वो पास करा, कोमा 2 पास करा। उसके बाद इतना रिजल्ट हमारे को कहाँ देना है? डिवीजन। कहाँ देना? डिवीजन में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हियर वी आर स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ दैट मेथड फॉर एंड वी आर पासिंग दैट वैल्यू टू द अनदर मेथड। क्लियर? ये स्टिल डाउट है? नहीं आया था समझ में। आप एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, आपको 10+2 का आपने 12 आपको रिजल्ट मिल गया, कहां पे स्टोर हुआ वो रिजल्ट? बताओ, यहां स्टोर होगा या नहीं होगा? आप एक बात बताओ, आपने ये एक्सप्रेशन करी थी, सी में स्टोर करवाया है। 10+2 10-2 ये करा था यहाँ पे, जी। यही था असाइनमेंट, यही था हमने करा। जब आपने व्हेन यू आर कॉलिंग दिस मेथड सम मेथड, तो क्या दे रहा है ये? व्हाट दिस मेथड इज रिटर्निंग? सब रिजल्ट, सम रिजल्ट 12,2 का रिजल्ट क्या मिलेगा? 12 12+2 सी मिला सर। 14 ओके सॉरी सॉरी, 10+2 12,2 14 मिलेगा ना। 14 जी कहाँ जी, स्टोर हो रहा है सम रिजल्ट में। और उसको कहाँ दे रहे हो आप? कहाँ दे रहे हो? ओके सर, मल्टीप्लाई को, मल्टीपल। जी है ना। यही तो वो देखो, वी आर पासिंग 10+2 रिजल्ट एंड, और वी कैन से 12+2 रिजल्ट एंड 12-2 रिजल्ट। वी आर पासिंग दिस रिजल्ट, किसको दे रहे हैं रिजल्ट हम? 14 और 10 किसको दे रहे हैं हम? मल्टीप्लाई को सर। मल्टीप्लाई को। तो यही करा ना हमने, क्या करा 14, 10 करने की बजाय हमने क्या करा, वेरिएबल दे दिया, क्योंकि वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? विच स्टोर सम वैल्यू, right? Here Yes. some result is storing which value? 14. Subtraction result is storing which value? 10. Yes. Okay. ट्राई करके देखना, हो जाएगा क्लियर। लास्ट टाइम प्लीज शेयर योर email ID in the group so that I will give the access. Yes please. So I have a question. So Yes please. for the assignment 1 and assignment 2 जो आपने दिया है, तो अगर लाइक मेथड तो हम सब असाइनमेंट 1 में भी बनाएंगे, तो कैन वी अलग अलग बना लो, गेट अलग द अलग क्लासेस आउटपुट? बना लो, अलग अलग क्लासेस बना लो। इसके लिए क्लास 2 बना लो, इसके लिए क्लास 1 बना लो। नहीं, बट एक में कॉल कर सकते हैं ना, आउटपुट तो कर एक में सकते भी हो आ बट सकता है। अलग अलग रखो, अलग अलग रखो दोनों असाइनमेंट्स को, कीप द सेपरेट। ठीक है। हाँ जी मीरा प्लीज। सर वन Yes, लास्ट please. क्वेश्चन।
Yes, please. Yes, please. रविंदर सर लाइक हम अगर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, देन वॉइड और नॉन वॉइड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? दैट्स बिट सर मेथड को कॉल करना, दैट इज मेथड कॉल, राइट? What you require from that method, that is related to void or non-void. That is calling only. Calling karna, right? That is only calling. Do you need the result of that method? Do we need the result of that method? Yes or no? Yes, if yes, then make it as a non-void. If no, then make it as a void. Calling करना अलग चीज है ना. बट सर जैसे उसी मेथड में हम ऑपरेशन करके वही सिसो के थ्रू रिजल्ट निकाल सकते हैं और रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू उस मेथड को कॉल करके उसका रिजल्ट आ जाएगा, राइट? सर लेकिन आप उसको उस रिजल्ट को आगे यूज कर पाओगे, ये बताओ मेरे को आप. हाँ, मतलब खाली डिस्प्ले हो पाएगा, आगे यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? डिस्प्ले, अगेन आई विल से, डिस्प्ले इज नॉट रिलेटेड टू void or non-void, right? CISO you can do in both cases, void or non-void. ठीक है जी, ठीक है. तो प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी इन द ग्रुप. मीरा, यस प्लीज, यू हैव सम क्वेश्चन. Yeah. See, when we do that the example which I can make it as a one method also. No, I can take it like and so why you are actually splitting up into small units? What is the difference if I put it into one and what is it is good coding practice to split the things. Don't write everything in a single method. Don't write everything in a single method. It is good coding practice to split the things, right? We will discuss Mira about this concept. Why we, if we are writing, let's suppose there are 100 lines in your code, in your method. Is it good approach? Is it good, easy to understand? Yes or no? If we are writing all the 100 lines, no na? But I know you mean like previously if I'm coming back after later, it will be difficult for us to Exactly Mira. If we are writing 100 lines of code in a single method, that will not be easy to understand, no? Okay. सर Yes please. सर ये जो लास्ट में हम लोग ने मेथड लगाया था मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें हम लोग ने वॉइड लिख दिया क्योंकि हमें कोई आगे रिजल्ट नहीं चाहिए था. सर अगर हम उसमें रिटर्न लगा देते तो तब भी सर आंसर तो आ सकता था. Error देगा सर, error देगा. If you are writing return here, it will give you the error. You can see, read the error. Void method cannot return a value. नहीं सर, मेरे कहने का मतलब जैसे ऊपर सर पब्लिक के बाद जो वॉइड लगाया था, अगर हम यहाँ रिटर्न भाई लगा रिजल्ट की जरूरत है या नहीं है? फरहाद, रिजल्ट की जरूरत है या नहीं है, ये बताओ आप. नहीं सर. तो क्यों लिखोगे आप इंट यहाँ पे? वाई वी आर राइटिंग इंट? प्रैक्टिकल सोचो ना, कर सकते हो, यू कैन डू, बट उसका यूज बताओ ना. हाँ सर, यूज नहीं, मतलब सर मैं भी पूछना चाह रहा था, अगर किसी ने गलती से लिख दिया कर तो सकते हो भाई, कंफ्यूज कर देगा. क्यों लिखूंगा यार मैं यहाँ पे इंट? वाई आई विल राइट इंट हियर? डिफरेंशिएट करो ना उस चीज को. सर ठीक है, तो प्लीज गाइस, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी इन द ग्रुप, राइट? आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड नोट इट डाउन फाइल, राइट? प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी इन द ग्रुप. शेयर करवा दो उसमें ग्रुप में. हाँ, ये ग्रुप में आप ही डाल दो एक बार, चाहे ये लो असाइनमेंट 2 का स्क्रीनशॉट डाल दो एक बार. जिनको एक्सेस पहले मिल चुका है उनको दोबारा ईमेल आईडी तो नहीं शेयर करनी ना? एक बार कुणाल भाई कर देना, लास्ट टाइम कर देना. हाँ जी, ये डाल दिया असाइनमेंट, इसका स्क्रीनशॉट.
एक इसका डाल दो और एक नेक्स्ट का डाल दो इसका। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you, sir. ओके जी, बाय बाय। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Bye-bye. Thank you, sir. ओके Thank जी, you. बाय। Thank you, ओके sir. बाय। Thank you, sir. ओके जी, बाय बाय। Thank you. Kalka 29:30.